दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Hi guys, welcome back to your own channel of Hope Conflict Technologies. I am Madhura Kalgaonkar and guiding you with having good communication skill. In having good communication skill, today we will understand what is actual meaning of your sentence. So the definition of sentence is a set of words that are put together to mean something. मतलब बहुत सारे word को जोड़ के हम लोग एक sentence बनाते हैं. A sentence is a basic unit of language. कोई भी language सीखने के लिए हमको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? Is your sentence which expresses a complete thought. तो जो भी sentence हम बनाते हैं, it is used to express your thoughts, your ideas, your emotions, right? It does this by following the grammatical basic rules of syntax. तो कोई भी sentence लिखने के लिए, बनाने के लिए, बोलने के लिए हमको कुछ grammatical rules, उसके कुछ syntax होते हैं जो follow करने पड़ते हैं. This is your very easy definition of sentence. So before learning the sentence completely, everyone should know what are first clauses. So let's first start with clauses. So what is a clause? Okay. So the clause, definition of your clause is, clauses are the units of grammar that contain a predicate that is a verb and a subject that is a noun. तो clause क्या है? It is the smallest part of your sentence. उसमें क्या होता है? verb होते हैं और उसमें noun होते हैं. तो आप लोग बोलोगे मैम sentence में भी तो verbs होते हैं, noun होते हैं. So what is the basic difference between your clause and your sentence? ओके, सो सेंटेंस क्या है ना, एक सेंटेंस में हम नंबर ऑफ क्लॉजेस ऐड कर सकते हैं. ओके, अ सेंटेंस कैन बी मेड ऑफ वन और मोर डिफरेंट नंबर ऑफ क्लॉजेस, बट अ क्लॉज कैन नॉट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ सेंटेंसेस. गॉट माई पॉइंट? सेंटेंस को हम बहुत सारे क्लॉज मिलके या फिर कोई भी एक क्लॉज को या फिर बहुत सारे क्लॉजेस को हम लोग एक सेंटेंस बोल सकते हैं. Okay, got my point. So let's first understand it, what I'm saying by your example. The first example is Rama sings songs. Okay, this is your first clause. Okay, Rama sings songs. Why? Because Rama is your noun, sings is your verb. So okay, so this is your clause. This is not a sentence. Okay, this is a sentence but this is actually a clause. Okay, got my point? Next example, he wanted to go to the beach but it started raining. In this example, he wanted to go to beach. क्या ये एक सेंटेंस है? इतना अगर मैं बोलूं he wanted to go to beach, उसको बीच पे जाना है. So this is a complete sentence. And make a different sentence by it started raining. It started raining, मैंने बोला बारिश शुरू हो गई, तो ये भी एक different sentence हो गया. So this पूरा sentence is made up of two different sentences, right? He wanted to go to beach is your first sentence, is your first clause actually, and the second clause it started raining. So a sentence can be made of number of clauses. Understood? The first clause is he wanted to go to beach and the second clause is it started raining. और उसको हमने जोड़ा कौन से word से है? It is your but. Okay, we connected these two sentences by using your but. This is your conjunction. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक sentence. It can be made of different number of clauses. Okay, now we have the next example. Okay, I have just explained it by this also. Now let's just take next example. It was already afternoon and the task allocated was still not finished. Okay, so in this sentence it was already afternoon. Is this a complete sentence? वो already afternoon हो गई थी, already afternoon हो गई थी, so it is a complete sentence. And if I'll say the task allocated was still not finished, जो task allocated था वो अभी भी खत्म हुआ नहीं था. So this is your first clause. Which is the first clause? It was already afternoon. It is your first clause. And the second clause is the task allocated was still not finished is your second clause. And this is joined by using your conjunction and. So understood the difference between a sentence and a clause. A sentence can be made of one or more different number of clauses like this example. Okay. So now we will understand what
are different types of clauses. Okay, so the clause can be divided into two different types, mainly two different types, which include your independent clause and the dependent clause. Okay, your independent clause is also known as the main clause, principal clause, and your dependent clause is known as your subordinate clause. Okay, so now again the dependent clause can be divided into different types, which include noun clause, then the adjective clause, and the third is adverb clause. Okay, so now we'll see each one of them in detail. What is an independent clause? Independent clause क्या होता है, right? A clause can be divided into two parts as explained earlier. So independent clause क्या है, उसको हम लोग main clause भी बोलते हैं. First thing, independent clause has both a subject and a verb. ओके, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है, मतलब एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है. इट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन सेंटेंस, मतलब हम अगर एक मेन क्लॉज ले ले तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस के जैसे भी एक्ट करता है, उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है. अगर हम एक क्लॉज मेन क्लॉज ले ले तो वी कैन फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस, वी कैन टेक आउट अ कंप्लीट मीनिंग फ्रॉम दैट सेंटेंस. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जाम्पल. So we shall learn to speak in English language. Okay, so this is your main clause, or we can say independent clause. Why? Because this is a single clause, right? ये एक ही clause है, लेकिन अगर हम इसको पढ़े तो it can act as a total complete sentence, और उसका पूरा meaning हम लोगों को निकलता है, समझ में आता है. We shall learn to speak in English language. We shall ने English language में बात करना सीखा. So understood, this is your main clause. And the next example is Rutusha laughs so loudly. Here you have a noun which is Rutusha and the verb which is laughs. और अगर हम ये पूरा पढ़े, Rutusha laughs so loudly, so उसका पूरा मीनिंग निकलता है, ऋतुजा जोर से हंसती है. So इसीलिए this is called as your main clause और independent clause, right? Now the next example, he ate pasta. अभी इसमें भी एक नाउन है, एक वर्ब है और सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकलता है, मतलब हमारे क्लॉज का पूरा मीनिंग मेन क्लॉज का निकलता है. So this understood this independent clause. There is another one example. John went to the park. Here we have a noun as John and a verb as went. So हमारे पास and John went to the park. जॉन पार्क में गया. इट ऑल्सो हैव अ कंप्लीट मीनिंग. ओके, सो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक कंप्लीट मेन क्लॉज बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिपेंडेंट क्लॉज. तब डिपेंडेंट क्लॉज के तो मतलब उसके सेंटेंस, उसके वर्ड में ही समझ में आता है कि उसका मीनिंग क्या है. ओके, डिपेंडेंट क्लॉज रिक्वायर्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू प्रोवाइड द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. मतलब डिपेंडेंट जो दूसरे पे डिपेंड हो, जो एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होगा, उस क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे. ओके, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. व्हेनेवर ही कम्स टू विजिट, जब भी वो विजिट को मतलब मिलने को आता है. सो इज देयर एनी मीनिंग? नो, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, मतलब इनको क्या बोलना है, व्हेनेवर ही कम्स टू विजिट, कुछ समझ में नहीं आया. सो फॉर दिस clause to complete we will need an independent clause. मतलब उसको complete meaning देने के लिए हमको एक independent clause को join करना पड़ेगा. यही हमारी definition बता रही है. Dependent clause requires an independent clause. कोई एक दूसरा independent clause join करेंगे तब ये clause का पूरा meaning निकलेगा. So it is dependent on another independent clause. Okay, there is another example. Before the food gets cold, मतलब तो फूड ठंडा होने से पहले. लेकिन क्या, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, इसको बोलना क्या है. ओके, सो इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस और सो दिस इज कॉल्ड एज योर डिपेंडेंट क्लॉज. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाटएवर इज नेसेसरी. तो इसमें से भी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसको बोलना क्या है. सो व्हेनेवर वी डोंट गेट अ कंप्लीट मीनिंग, इट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर क्लॉज, इट इज नोन एज योर डिपेंडेंट क्लॉज. ओके, now let's understand there are different types of dependent clauses as well, which include, first is your noun clause. So what is a noun clause? Okay,
there is an example of noun clause itself. तो उससे आपको what is actually the noun clause, जो noun के जैसे काम करता है. If it acts as a noun in your sentence, so it is known as your noun clause. So what is the first example? I understood why it was necessary. Okay, so I understood, मुझे समझा. I understand, मुझे समझा. क्या समझा? लेकिन क्या समझा? Why it is necessary, कि ये क्यों necessary है, ये मुझे समझा. So what is your noun? What sentence, which part of sentence is acting as your noun? Why is it was necessary, कि वो जरूरी क्यों था. So in this sentence, why it was necessary is your noun clause. Okay, and is it dependent on I understood? अगर मैं इतना ही पढ़ूँ why it was necessary तो complete तो नहीं हो रहा, इसीलिए we need I understood. Got my point? Next sentence, I want to know what he did. इसमें भी I want to know, मुझे समझना है, मुझे जानना है. क्या जानना है? लेकिन what he did. So in this example also noun clause is your what he did. Now let's see next example. I don't know if my brother is at home. मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे क्या पता नहीं है? If my brother is at home, कि मेरा भाई घर पे है या नहीं. If my brother is at home, मेरा भाई घर पे है क्या, ये मुझे पता नहीं. So in this example also, if my brother is at home is your noun clause. Okay, next example, I need to explain. मुझे explain करना है. But what is a noun clause? What a noun clause is, कि noun clause क्या है? So I need to explain, लेकिन क्या explain करना है? What a noun clause is. So in this example also, what is your noun clause in the sentence? What is a noun clause itself? Understood? Now there is another example which says, our dogs eat. Our dog eats. हमारा डॉग खाता है, लेकिन क्या खाता है? Whatever we put in his bowl, जो भी हम उसके बाउल में डालेंगे खाने के लिए वो खाता है. So what is your noun clause? Whatever we puts in his bowl. Also whatever he puts in his bowl, ये अगर हम इतना ही पढ़े whatever we puts in his bowl, तो उसका complete meaning निकलता है क्या? नहीं. So we need a independent clause. Our dog eats. Okay, तो इसका पूरा whatever we put in his bowl, इसका मीनिंग समझने के लिए हमको पहले our dog eats ये पढ़ना पड़ा. So this is your independent clause which we connected with your dependent clause. Got my point? Now let's understand what is adjective clause. So adjective, जो भी sentence में adjective के जैसे act करता है, a part of sentence which act as an adjective is known as your adjective clause. Okay, so let's understand this with example itself. So the example is, the students who were called first will have the best chance of getting a seat. So the students who were called first will have the best chance of getting the seat. वो student जो कि who were called first. So what is the more information about your student who were called first, जिनको पहले बुलाया था, who were called first. Okay, so this is your adjective clause in the sentence. Next example, people who are smart follow the rules. Okay, people rules follow करते हैं, but what is more information about the people who are smart? People who are smart. So who are smart is your adjective clause. Understood? In the next example, Charlie has a friend whose daughter lives in China. Charlie का एक friend है. Okay, what is the more information? Whose daughter lives in China. This is the more information about your friend. So this is known as a adjective clause. Okay, now let's see next example. I want to read a book which is going to help me to learn English. मुझे एक book पढ़ना है. But which book? What is the more information about your book? Which is going to help me to learn English. Okay, to learn English. So this is your more information about the book. This is known as your adjective clause. Okay, there is another one example. The building
which he lives in is very old. So एक बिल्डिंग है जो पुरानी है, बट व्हाट इज द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बिल्डिंग which he lives in, जिसमें वो रहता है. So this is more information about your building. So this is known as your adjective clause. Understood the adjective clause? Now let's see next clause, which is your adverb clause. Okay, so the part of sentence which can act as an adverb is known as your adverb clause. Let's understand with the example. I might leave early as I have an important task. I might leave early. शायद मुझे जल्दी जाना पड़ेगा. But why you want to leave early, right? क्यों जाना पड़ेगा? As I have an important task. So this is your adverb clause in the sentence. Got my point? अगर मैं सिर्फ as I have an important task को पढ़ूं तो complete meaning निकलता है क्या? No, नहीं. So this is called as your dependent clause. Okay, and independent clause, this is your adverb clause. Got my point? Now let's see next example. Before she got home, she called and ordered a pizza. Okay, so she called and ordered a pizza. इतना भी अगर मैं सेंटेंस पढ़ लूँ तो उसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है. बट बिफोर शी गॉट होम, सो दिस इज योर एडवर्ब क्लॉज इन द सेंटेंस. उसने घर पे जाने से पहले ही पिज्जा को ऑर्डर कर दिया. सो एडवर्ब क्लॉज इज बिफोर शी गॉट होम. नेक्स्ट एग्जाम्पल. द किड्स कैन वॉच टीवी आफ्टर दे फिनिश द होमवर्क. किड्स टीवी देख सकते हैं, लेकिन कब देख सकते हैं? आफ्टर दे फिनिश देयर होमवर्क. जब वो होमवर्क कंप्लीट करेंगे तभी वो लोग टीवी देख पाएंगे. सो व्हाट इज योर एडवर्ब क्लॉज? आफ्टर दे फिनिश द होमवर्क. गॉट माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. आई विल कॉल यू. मैं तुम्हें कॉल करूंगा, लेकिन कब कॉल करोगे? आफ्टर द मीटिंग गेट्स ओवर. जब मीटिंग खत्म होगी तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा. सो इन दिस सेंटेंस ऑल्सो एडवर्ब क्लॉज इज योर आफ्टर द मीटिंग गेट्स ओवर. Got my point? Next example. Though he had a high fever, he continued working. He continued working. उसने काम उसका चालू ही रखा. Even though he has, उसको हाई फीवर था, फिर भी उसने काम चालू रखा. So though he had an high fever is your adverb clause in the sentence. Okay, so got my point? I think you are clear with these types of verb. Now हमने ये सब verbs क्यों सीखे? Okay, so why we studied this? Because we want to learn what is a sentence. Okay, so let's get back to your sentence. Okay, there is an example which says everyone started crying as soon as I gave my resign. Everyone started crying. सबने रोना शुरू कर दिया. But when they started crying? As soon as I gave my resign. जैसे ही मैंने मेरा resign दिया तब सबने रोना चालू कर दिया. So in this adverb clause is your as soon as I gave my resignation. Okay, so now let's get back to our sentence. Okay, now let's understand why I teach you the number of clauses. Okay, because the sentence is made up of number of clauses. Now the sentence can be divided into 3 different types. Okay, the first type is your simple sentence, the second is compound sentence, and the third is complex sentence. Now let's understand each one of them in detail. So now start with our first, that is simple sentence. So what is a simple sentence? A simple sentence is a sentence that contains a single independent clause. सिंगल सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. तो जो सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हो उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहेंगे. गॉट माय पॉइंट? Let's understand this with example. Okay, Geeta and Sita like dancing. तो यहाँ पे दिस इज योर सिंगल, दैट इज योर मेन क्लॉज. ओके, क्योंकि ये एक मेन क्लॉज हो गया, बट दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ, क्योंकि उसका पूरा मीनिंग निकल रहा है. गीता एंड सीता लाइक डांसिंग. उन दोनों को, गीता और सीता को डांसिंग अच्छा लगता है. सो अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है हमारे सिंपल सेंटेंस में. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. विराट लव्स प्लेइंग क्रिकेट. विराट को
क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है. So this is also a single independent clause and which is known as your simple sentence. Okay. And okay, now let's see next example. Geeta likes dancing but she hates painting. Okay, तो यहाँ पे तो गीता likes dancing, तो likes और hates, these are your verbs. We have two verbs in a single sentence, a single independent clause. So understood? एक single independent clause में हम number of different verbs, number of different nouns ले सकते हैं, जैसे कि गीता और सीता, ये हमारे दो नाउन एक सेंटेंस में हो गए. और likes और hates, ये दोनों वर्ब भी हमारे एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज में हो सकते हैं. सो दिस इज योर सिंपल सेंटेंस. नाउ वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल. द ट्रेन वाज लेट. दिस इज आल्सो योर सिंपल सेंटेंस एंड इट इज योर मेन क्लॉज आल्सो. Okay, now let's understand what is your compound sentence. A compound sentence is a sentence made up of two independent clauses. दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करके हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं विच आर कनेक्टेड बाय यूजिंग अदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे कि बट, ऐसा बट, बिकॉज. दिस टाइप ऑफ कंजंक्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट योर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलके हम लोग एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल्स. Ravi waited for the train, okay, but the train was late. In this sentence, Ravi waited for the train. This is a complete sentence if you read only till this. Ravi waited for the train. So this is your one independent clause, क्योंकि उसका पूरा मीनिंग निकलता है. Ravi waited for the train. उसने ट्रेन का वेट किया. And the second independent clause is the train was late. ट्रेन लेट थी, बट द ट्रेन, एंड this is a complete sentence by joining two independent clauses. Got my point? And the conjunction which is used here is but. Okay, so understood. Now let's see next example which says everyone was busy so I went to the movie alone. सब लोग busy थे इसीलिए मैं अकेली ही मूवी देखने चली गई. In this sentence, everyone was busy is your one independent clause, and the second independent clause is I went to the movie alone. So the conjunction which join these two independent clause is your so. So got my point? Compound sentence दो independent clause को मिला के बनता है. Okay, now let's see some next examples. I have chosen a bike and I want to buy this bike. मैंने एक बाइक चूज करके रखी है, सिलेक्ट करके रखी है और मुझे वही बाइक खरीदनी है. I want to buy this bike. So in this sentence, I have chosen a bike. This is your one independent clause and the second independent clause is I want to buy a bike, and the conjunction which is joining is and. तो दो independent clause को join किया है, and also we have a comma over here. तो दो independent clause को जब join करेंगे, उसको अगर हम comma से भी join करेंगे तो भी हम लोग उसको compound sentence बोलेंगे. Okay, now let's see one more example. She is good at sport. She works as a trainee. वो sports में अच्छी है तो वो trainee मतलब she works as a trainee, वो trainee का काम करती है. So in this sentence, she is good at sports is your one independent clause, and the second clause is she works as a trainee. This is your second independent clause, and the one which is joining this sentence is your semicolon. तो semicolon भी दो independent clause को join कर सकता है. Got my point? This is your complete compound sentence. Now next we'll see is the next example. It's dark in here, but there are candles on the टेबल. सो इट्स डार्क इन हियर, मतलब यहाँ पे अंधेरा हो गया है. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज देयर आर कैंडल्स ऑन द टेबल, मतलब टेबल पे कैंडल्स है.
मतलब अंधेरा हो गया है लेकिन टेबल्स पे कुछ कैंडल पड़ी हुई है. बट माई पॉइंट, सो वी हैव टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. इज द फर्स्ट इज इट्स डार्क इन हियर एंड द सेकेंड इज देर आर कैंडल्स ऑन माई टेबल एंड द कंजंक्शन विच इज ज्वाइनिंग दीज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इज योर but. Okay, so understood what is a compound sentence. Now let's understand what is a complex sentence. A complex sentence is a sentence that contain one independent and at least one dependent clause. तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? जो कोई भी वन इंडिपेंडेंट क्लॉज से बना हो और कम से कम एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज से बना हो. वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, उसको दोनों को मिला के वी फॉर्म अ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल्स. When she was younger, she believed in fairy tales. In this example, when she was younger, ये हमारा क्या हो गया? अगर हम इतना ही पढ़ ले, when she was younger, जब वो छोटी बच्ची थी, वो छोटी थी, तो वो तो कंप्लीट मीनिंग निकल रहा नहीं है सेंटेंस का. सो दिस इज योर डिपेंडेंट क्लॉज इन द सेंटेंस. सो वी विल हैव वन डिपेंडेंट, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज. एंड द अनदर क्लॉज इज शी बिलीव्ड इन फेरी टेल्स. वो फेरी टेल्स पे भरोसा करती थी. सो दिस इज ऑल्सो योर वन क्लॉज विच इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि उसका पूरा मीनिंग निकल रहा है शी बिलीव्ड इन फेरी टेल्स का. So we will form a complex sentence by joining at least one dependent clause and one independent clause. Okay, got my point? Let's see some next example. And the next example is, I really don't like the movie even though the acting was good. मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी even though कि the acting was good, उसकी एक्टिंग अच्छी थी फिर भी मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी. सो इन दिस एग्जाम्पल, आई रियली डोंट लाइक द मूवी इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर मेन क्लॉज. मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी, इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है. सो दिस इज योर मेन और विच इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. एंड द नेक्स्ट क्लॉज इज इवन दो द एक्टिंग वॉज गुड. So in this sentence, even though the acting was good is your dependent clause. So understood my point, that we will have one dependent and at least one dependent clause in your sentence. So now let's understand with some more example. She returned the computer. उसने computer return मतलब वापस भेज दिया. Is this forming a complete meaning in itself? Yes. So this is your independent clause and the dependent clause is after she noticed it was damaged. After जब उसने ये समझा कि वो damaged था. So this is your dependent clause in the sentence. So understood what is a complex sentence. Okay, now let's see with one more example which include, he will be happy if he gets the good job. So in this example, he will be happy. This is your independent or main clause, and the second dependent clause is if he get good job. If he gets good job. Okay, so understood the complex. So guys, I hope you're clear with what are clauses and the types of sentences, that is simple sentence, compound sentence and complex sentence. So please don't forget to like my videos and please subscribe those. Thank you so much. Bye bye.